Hey, good morning everyone from Jaipur, from the Pink City. And this also happens to be my Sasural. Pooja is from Jaipur. This is the place where we met, and stuff happened. Anyway, आज सुबह 6 बजे निकले थे. So morning के टाइम पे इस टाइम पे ट्रैफिक भी कम रहता है, and you get to experience the mood of the city as it wakes up. गुलाबी शहर में आए और गुलाब जी की चाय नहीं पी है, ऐसा कभी हो सकता है? तो हमने आज पी है कड़क मसाला चाय, मस्का बन और सैंडविच करेक्ट. तो व्हेन आई वाज इन जयपुर आई यूज्ड टू कम हियर वेरी फ्रिक्वेंटली. पर बात वही है, मतलब बहुत हैं जयपुर में चाय वाले, बट गुलाब जी की बात खास है. ही इज अ चाय वाला विद अ कॉज. Correct. Ever since he started his shop in 1947, which is before independence, he had been serving tea to the poor and the homeless. In fact, today also, if you visit, आज भी उनके दुकान के बाहर मॉर्निंग में 6 बजे के टाइम पे almost 200 people line up to get free tea and maska bun. So he is definitely a chai wala with a cause. A salute to this gentleman who, in spite of being a chai wala, tried to do some good to the society and serve for a noble cause. Sadly, he passed away last year at the age of 94. So long live the spirit of Gulab Ji. And as this is a breakfast drive, so now we will be going to Sanjay Omelette, which is quite famous. And incidentally, I've heard that this guy, Sanjay Sharma, he was also in MasterChef, right? MasterChef India. Yeah. तो चलिए चलते हैं. So we are at Egg D's right now, Sanjay restaurant. So trying to make a selection over here. Yeah, this used to be a very small joint earlier. I am coming after 4 years. It was a small shop downstairs, but now I am seeing that they have made quite a nice setup here. This is something new for me as well. They have a very elaborate menu now. So let's see. Yes, so our tandoori omelette is here. So this is how it looks. We'll give you a closer view. So this is how the tandoori omelette looks. Slightly loaded with cheese, a lot of cilantro on top. Okay, so let's take a bite and we'll let you know how it tastes. Moment of truth once again, and here it comes. This is awesome. Very soft and moist. Eggs perfectly cooked, not too runny and not too dry. The flavor is completely unique. Straight from the heaven. I think I'll stop this video now and enjoy this. So your other order is also coming, right? Yeah. So what is that you have ordered? Some sandwich. What was that? Grilled sandwich. No. Heart attack sandwich. Correct. Heart attack sandwich. Before that, I'll take the last piece of this and get ready for a heart attack, which is coming soon. I think it's there already. So as you can see, it looks like it's filled with cheese and veggies and whatnot. I think there's some potato also, egg also. Yeah, egg is also there. Definitely it is there. Yeah. So all these preparations are based out of egg. So how's it? It's good. But yeah, tandoori omelette was my favorite. Okay, then I will save the last bite of tandoori omelette.
and jump right into this heart attack thing. It's very basic. Hands down, tandoori omelette is the winner, which I've saved a little for the end. This is like, you can find it in a Subway as well. It's good, but not that great like what we had just now. Let us try to find out something else which can give that same feeling that we had for this tandoori omelette. So here it is. This is called egg halwa. So this is how it looks. Looks reasonably moist. Smells awesome. It has cashews as well. भैया ये किस चीज का बना हुआ है? एग और मावा. It's good, right? It's good. So definitely recommend you to come here once if you are in Jaipur and try out their egg specialities, the delicacies that they have. With this egg halwa, we'll finally call it a lunch. We came here for snacking, but looks like our lunch is also done. We'll be going to Bapu Bazaar, right? So we are going to Bapu Bazaar. So stay tuned. I'll enjoy all this. तो अभी हम बापू बाजार में हैं। तो ये मार्केट कितना साल पुरानी है ऐसे? ये तो सर 1947 के बाद में ही बना हुआ मार्केट है। इंडिपेंडेंस के बाद मार्केट बनी थी। डिवाइडेशन के बाद से हाँ शरणार्थी आए थे पाकिस्तान से। हाँ उनको गवर्नमेंट ने यहाँ सबको शॉप दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये शॉप हमारे को 1947 में गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए के अंदर दी थी। अच्छा। और उसके एवज में जो पैसे उन्होंने हमारे से लिए थे वो भी 100 रुपए मंथली के हिसाब से लिए थे। फिर अभी मैं ओके। सुबह यहाँ पे एक मकान और एक दुकान। हाँ। ये हम लोगों को शरणार्थी, हम लोग 1947 में जो डिवाइडेशन होता हम लोग पाकिस्तान से आए और हम गवर्नमेंट भारत सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे को पनाह दी और बहुत अच्छा आगे बढ़ाने का मौका दिया। क्या बात, सही बात है। इस कलर की सबसे बड़ी खासियत है, ये 30 पे आपको ये कलर मिलेगा। सब लेडीज ये कलर पहनती हैं। ये कितना लेंथ है इसका जुड़ा? ये 5.5 लेंथ है इसका ब्लाउज। मेरा नाम दीपू भाटिया है, दुकान नंबर 26 बापू बाजार जयपुर से। यहाँ का हर चीज हम जो यहाँ जयपुर में जो ट्रेडिशनल आइटम है, हैंडमेड बंदेज का आइटम, ब्लॉक प्रिंट का आइटम, साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे और फॉरनर आइटम सब हम लोग हैंडमेड ही बनाते हैं। फॉर हुम? ये हेरिटेज मार्केट कहलाता है और पूरे गिनीज बुक के अंदर इसका नाम भी है। जो भी पूरे वर्ल्ड से कस्टमर आता है वो बापू बाजार में जरूर आता है, क्योंकि यहाँ की चीजें फेमस हैं और यहाँ की हर दुकान भी हेरिटेज तरीके से बनाई हुई है इसकी सिटी के हिसाब से भी। और जयपुर में सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन मार्केट बापू बाजार ही है, जिसमें सबसे पुरानी दुकान 50 साल पुरानी दीपू साड़ी एम्पोरियम ही है। थैंक यू वेरी मच अंकल। वेलकम सर। तो अगर आप जयपुर आ रहे हो तो डेफिनेटली डू विजिट बापू बाजार, दुकान नंबर 26 बापू बाजार जयपुर। अंकल जी से मिलना, अंकल जी बढ़िया से डिस्काउंट लगा देंगे। दीपू भाटिया है अंकल जी का नाम। शुक्रिया अंकल जी। थैंक यू। लेके जाओ चोरी।
Acha. Okay. This one you're saying, right? Okay. Wait 1 second. Acha, eta बोल चुकी. Besan churma, this is wheat churma, this is gulab churma, this is bajra churma. This is another specialty, feni. Feni. Okay, so now we are at Lakshmi Mishtan Bhandar. We have taken our ghevar. Rabdi ghevar it is. The crust is made of paneer. The topping is of rabdi. One of the specialities of Jaipur. I would say Rajasthan, but especially Jaipur. It is a must-have if you come to Jaipur or Rajasthan, any place. Teej, the special festival, most important festival for any Rajasthani. It is a must-have sweet in Teej. We are here and we are enjoying it. And to top it up, this rabdi is just so amazing. So now time for me to take a bite. So it is the perfect balance of sweet and a little salty also. The ghevar, I think. The crust is salty, right? Little salty there. So which balances the taste. Does not make it too loud. So it is crispy and soft at the same time. Correct. So if you see, I have to put some pressure to break it, and there it comes. So I'll take a spoonful with this, add a little bit of rabdi. This tastes awesome.